explain the early psychological approaches of understanding psychopathology. 1. Care for mental patients. People realized the importance of treating individuals with mental disorders with kindness and responsibility. 2. Reforms in asylums. Visionary thinkers like P. Pinnell, William Tuke, Benjamin Rush, and Dorothea Dix brought about changes in mental hospitals to improve conditions and provide better care. 3. Moral treatment. The focus shifted to treating mental illness with respect and dignity, believing that compassionate care could help alleviate suffering. 4. Hospitals for mental health. Specialized facilities were established to house and treat individuals with mental disorders, providing them with the care they needed. 5. Rise of psychiatry. With the growth of mental institutions, the field of psychiatry emerged as a profession dedicated to understanding and treating mental illness. 6. Experienced superintendents. Physicians with expertise in caring for people with severe mental disorders were appointed as superintendents in asylums. 7. Professional associations. The Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane, AMSAII, later known as the American Psychiatric Association, APA, was formed to bring together mental health professionals. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताते हैं कि असामान्यता की समस्याएं कई बार किसी शारीरिक समस्या से नहीं होती। इन दृष्टिकोणों में मनोयोग्यता के कारण और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ भावनाएं, विचार और संवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे असामान्यता को समझा और उपचार किया जा सकता है। 1. मानसिक रोगियों की देखभाल में सुधार। प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की देखभाल में सुधार करने का महत्व बताया। 2. आश्रयों में सुधार। उन्होंने आश्रयों में सुधार के लिए परिवर्तनों का प्रचार किया, जिससे संस्थानों की स्थिति और देखभाल में सुधार हुआ। 3. नैतिक उपचार। मानसिक रोगों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान दिया गया, जहां मानसिक बीमारी को कम करने में मानवीय देखभाल की मदद मिलेगी। 4. मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल। विशेष आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जहां मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को उपचार और देखभाल मिल सके। 5. पसाइकिएट्री का उदय। आश्रयों के विस्तार के साथ मानसिक विकारों के इलाज के लिए मनोचिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। 2. Describe the Freudian topographical structure of personality. The Freudian topographical structure of personality can be described as follows. 1. ID. The ID represents a person's unconscious desires and natural drives. It seeks immediate gratification, disregarding reality, order, logic, and reason. The ID operates on the pleasure principle, similar to a child's behavior when wanting something without considering the consequences. It has its own way of processing information, which is illogical, emotional, and selfish. 2. Ego. The ego balances the desires of the ID with the need to abide by societal norms. It operates according to the reality principle and engages in logical and rational thinking. The ego resolves conflicts between the demands of the ID and the restrictions imposed by the superego. 3. Superego. The superego incorporates moral and ethical standards taught by parents, teachers, and society. It represents the conscience of the psyche and operates according to moral principles. Violating moral standards generates guilt. These 3 components interact within the mind, with the ego mediating conflicts between the ID and the superego. If successful, an individual demonstrates well-adjusted behavior. However, if the ego is unsuccessful, either the ID or the superego becomes dominant, resulting in different psychological states. Along with the topographical structure of personality, Freud also described levels of consciousness, stages of psychosexual development, anxiety and defense mechanisms, and psychoanalytic therapy as key elements of his approach. फ्रॉयडियन व्यक्तित्व की टॉपोग्राफिकल संरचना का वर्णन करेंगे। यह व्यक्तित्व के 3 मनोमय संरचनाओं को वर्णित करती है। 1. इड व्यक्ति की अव्यवस्थित इच्छाएं और प्राकृतिक ड्राइव को संदर्भित करता है। ये सीधे आनंद तक पहुंच कराने की इच्छा रखता है, जो वास्तविकता, क्रम, तर्क और विचार की मांगों को छोड़ता है। इड की सोचने की प्रक्रिया अनियमित, तर्कहीन,
भावनात्मक और अपरिपक्व होती है। इट के भीतर ऊर्जा को लिबिडो कहा जाता है। 2. ईगो ईगो व्यक्ति की इच्छाओं के साथ मेल जोड़कर उन्हें बिना सभी के सामर्थ्य को चोट पहुंचाए मिलाता है। ईगो वास्तविकता की मांगों के बाहरी सीमाओं के अनुरूप संघर्षों को सुलझाने का काम करता है। ईगो की सोचने की प्रक्रिया तर्क, वचन्यता और विचार के साथ चरित्रित होती है। 3. सुपर ईगो व्यक्ति के अंतर्गत नैतिक और नैतिक मानकों को संग्रहित करता है। यह माता-पिता, शिक्षक और संस्कृति द्वारा सिखाए गए नैतिक मानकों का भंडारण करता है। सुपरईगो नैतिक नीति के अनुसार कार्य करता है। जब हम कुछ गलत करते हैं और नैतिक मानकों का उल्लंघन होता है तो सुपरईगो द्वारा अपराधिता उत्पन्न होती है। ये थे व्यक्तित्व की टॉपोग्राफिकल संरचना के मुख्य तत्व। ये संरचनाएं व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को व्याख्या करती हैं और हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। 3. Explain the importance of stages of psychosexual development in understanding psychopathology. 1. Oral stage, birth to 2 years. In this stage, the mouth is the center of pleasure and exploration. Fixation or problems at this stage can lead to behaviors like nail biting, thumb sucking, or overeating. 2. Anal stage, 2 to 3 years. This stage focuses on toilet training and control over bodily functions. If there are conflicts or fixation during this stage, it can result in traits like being overly neat, organized, or rebellious. 3. Phallic stage, 3 to 5 years. This stage involves the development of sexual feelings towards parents. Boys experience the Oedipus complex, where they have romantic feelings for their mother and rivalry with their father. Girls experience the Electra complex, where they shift their attention from their mother to their father. 4. Latency stage, 5 to 12 years. During this stage, sexual feelings are repressed and children focus on developing social, academic, and personal skills. 5. Genital stage, 12 years onwards. In this final stage, sexual interests and desires reemerge, and individuals become more preoccupied with forming romantic relationships. This stage is crucial for healthy development and the ability to form satisfying adult relationships. सामाजिक मनोविज्ञानी परिप्रेक्ष्य से बाल्यावस्था के विभिन्न मानसिक विकारों को समझने में साइकोसेक्सुअल विकास के चरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नीचे दिए गए विवरण में छोटे सरल शब्दों में समझाया गया है। 1. मुखांक चरण, जन्म से 2 साल तक। इस चरण में मुख मनोहरता और अन्वेषण का केंद्र होता है। इस चरण में संकट या समस्या होने पर नाखून चबाना, अंगूठा चूसना या ज्यादा खाना खाने जैसे व्यवहारों का होना संभव होता है। 2. मलांग चरण, 2 से 3 साल तक। इस चरण में शौचालय प्रशिक्षण और शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण केंद्रित होता है। इस चरण में संकट या दिक्कत होने पर व्यक्ति अत्यधिक स्वच्छता, संयम या अनुशासन की ओर अत्यधिक ध्यान देता है। 3. शिशुभाव चरण, 3 से 5 साल तक। इस चरण में पितृभक्ति और मातृभक्ति के प्रति लैंगिक भावनाएं विकसित होती हैं। लड़के में ओएडिपस कम्प्लेक्स होता है, जहां उनके पास माता प्रेम की भावना होती है और पिता के साथ प्रतिस्पर्धा होती है। लड़कियों में इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है, जहां वे माता से दूर होती हैं और पिता के पास आती हैं। 4. अवसन्नता चरण, 5 से 12 साल तक। इस चरण में लैंगिक भावनाओं का सुगमन हो जाता है और बच्चा मुख्य रूप से सामाजिक, शैक्षिकी और पेशेवर कौशल विकसित करने में लगा रहता है। 5. जननांग चरण, 12 साल और उससे आगे। यह अंतिम चरण है, जहां लैंगिक रुचियों और इच्छाओं की प्राथमिकता बढ़ती है और व्यक्ति अपने दिखावे, वेशभूषा और बातचीत के माध्यम से विपरीत लिंग के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव डालने में अधिक प्रवृत्त होता है। 4. Give an account of the concepts of anxiety and defense mechanisms as explained by Freud. Freud explained the concepts of anxiety and defense mechanisms, which are important in understanding how our mind deals with inner conflicts and protects itself. Here is a simple explanation. Anxiety is a feeling of fear or unease that arises when we face certain situations or conflicts. Freud identified 3 types of anxiety. Reality anxiety. This is the fear of real and possible events, like being bitten by a dog or falling from a ladder. To reduce this anxiety, we may avoid or remove ourselves from the situation.
Moral anxiety arises from the fear of violating societal values and moral codes. When we do something wrong or go against our ethical standards, we may feel guilty. Defense mechanisms are unconscious strategies our mind uses to protect us from anxiety and distress. They help us cope with inner conflicts and reduce tension. Here are some common defense mechanisms: denial, refusing to accept or believe something that causes anxiety. Displacement, redirecting emotions or impulses towards a substitute target. Rationalization, creating logical but false justifications for our thoughts or actions. Projection, attributing our own unacceptable thoughts or feelings to others. Regression, reverting to earlier, more childlike behaviors when faced with stress. Repression, pushing distressing thoughts or memories into the unconscious mind. Sublimation, channeling unacceptable impulses into socially acceptable activities. These defense mechanisms distort or transform reality to help us feel less anxious. However, they can also limit our understanding of ourselves and our true emotions. विस्मरण, बुरे विचारों या स्मृतियों को भूल जाना. प्रतिक्रिया, दूसरों पर गुस्सा या अस्वीकार्य भावनाएं ठहराना. विचारिकीकरण, बातों को तथ्यात्मक बनाना या गलत बहाने बनाना. प्रकाशन, अस्वीकार्य, विचारों या भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना. स्थायित्व, तंगी के साथ निपटने के लिए अपने बचपनीय तत्वों पर वापस जाना. दबावन, अप्रिय विचारों या स्मृतियों को मन में दबाना. समुच्चयन, अस्वीकार्य उद्दीपकों को स्वीकार्य कार्यों में रूपांतरित करना. ये संरक्षण तंत्र हमें चिंता कम करने में मदद करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इन तंत्रों से हम खुद को समझने में रुकावट आ सकती है और अपनी सच्ची भावनाओं को समझने से रोक सकती हैं. 5. Elucidate the process of psychoanalytic therapy. Psychoanalytic therapy is a type of treatment developed by Sigmund Freud. Let me explain it to you in a simple and easy way. In psychoanalytic therapy, the person is encouraged to talk freely about their thoughts, feelings, and experiences. The therapist listens carefully and helps the person explore their unconscious mind, which is a part of the mind that holds hidden thoughts and emotions. Techniques like free association and dream analysis are used to uncover unconscious thoughts and bring them to conscious awareness. The therapist pays attention to the person's childhood experiences and how they may have influenced their current thoughts and behaviors. The therapist also helps the person understand the defense mechanisms they use to cope with anxiety and emotional pain. Transference, which is the projection of feelings onto the therapist, is an important part of psychoanalytic therapy. It helps the person understand their patterns of relating to others. By gaining insight and understanding, the person can work towards resolving their conflicts, developing healthier coping mechanisms, and improving their overall well-being. Psychoanalytic therapy requires time and commitment as it involves exploring deep-seated emotions and unconscious processes. psychoanalytic चिकित्सा एक प्रकार का उपचार है जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने विकसित किया. चलिए मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूँ. psychoanalytic चिकित्सा में व्यक्ति को उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने की प्रोत्साहना की जाती है. चिकित्सक सावधानीपूर्वक सुनता है और व्यक्ति को उनके अचेत मन की खोई हुई विचारों और भावनाओं का पता लगाने में मदद करता है. मुफ्त संबंध करने और स्वप्न विश्लेषण जैसे तकनीकों का उपयोग करके अचेत मन के विचारों को खोलने का प्रयास किया जाता है. चिकित्सक व्यक्ति के बचपन के अनुभवों पर ध्यान देता है और यह कैसे उनके वर्तमान विचार और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, इसे समझने में मदद करता है. प्रतिस्पर्धी, जिसमें भावनाएं चिकित्सक पर प्रोजेक्ट की जाती हैं, psychoanalytic चिकित्सा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह मदद करता है कि व्यक्ति अपने दूसरों के साथ संबंध बनाने के पैटर्न को समझे. समझ और ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से व्यक्ति संघर्षों को हल करने, स्वस्थ संघर्ष प्रबंधन के तरीकों को विकसित करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में काम कर सकता है. psychoanalytic चिकित्सा समय और समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें गहरी भावनाओं और अचेत मन की प्रक्रियाओं का पता लगाना होता है.
इसका लक्ष्य है कि व्यक्ति व्यक्तिगत विकास, स्वच्छ ज्ञान और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें।